Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371-7106 or 2342-1050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्रा हाजिर है। आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23717106 और 23314444। हमारा तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। A warm welcome, Shishir. Thank you very much. और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Cabinet approves 4% hike of dearness allowance to central government employees. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets chiefs of PSU banks to review performance. And domestic equity indices decline about 1% during the week. Sensex closes near 57,520 and Nifty settles below 16,950 level. सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की और घरेलू शेयर बाजारों में सप्ताह के दौरान लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स लगभग 57,520 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी 16,950 के स्तर के नीचे आ गया। और आज की पहली खबर, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर 42% हो गया है। इसका लाभ इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों और 69 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इस फैसले से प्रतिवर्ष 12,815 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त व्यय होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। और शिशिर, जो ये खबर है हमारी कि महंगाई भत्ते को सरकार ने बढ़ाया, हालांकि बहुत ही एक नियमित सा प्रोसेस है। आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? Shishir, can you hear us? We have lost touch with Shishir, but in the meantime, let's take the next headline story. Finance Minister Nirmala Sitharaman today chaired a meeting to review the performance and preparedness of the public sector banks. The review was based on various financial health parameters and the resilience of PSBs in light of the current global financial scenario emanating from the failure of some international banks in the USA and Europe. During the meeting, Ms. Sitharaman emphasized on preparedness along with due diligence through adherence to the regulatory framework by focusing on risk management.
diversification of deposits and asset base. She underlined that the PSBs must look at business models closely to identify stress points, including concentration risks and adverse exposures. The minister has urged the PSBs to use this opportunity to frame detailed crisis management and communication strategies. Ms. Sitharaman also advised the PSBs to aim at increasing brick and mortar banking presence in broader and coastal areas. Amrish, this is very important that the PSB take the review as to how the performance goes on throughout the year, and also be prepared for any eventuality. Shishir, what do you have to say about this meeting that the finance minister took today with the PSB bank's chiefs? I think that there are 6 points which need to be considered in this meeting. The first and the most important point was about the amendment in the finance bill, which has given some kind of advantage to the bank deposits. So earlier, you must be knowing that all the debt funds were having some kind of arbitrage, but now they are at par with the bank deposits. And since bank deposits are offering higher rates, so banks will be in a position to offer deposits at a better situation or a better rate. So I think Finance Minister has rightly pointed out that the bank should take note of this particular amendment and go for aggressive deposit mobilization. The second one, which is a very, very important thing, that is about the failure of banks in the United States. We all know that Silicon Valley banks and Signature banks, as well as the Credit Suisse bank, they all have failed. So considering the failure of these banks, what Indian banks can do so that there should not be any kind of problem for these banks. And the good thing is that the finance minister noted that all the banks are doing very well at this moment. The third and the important point was about focusing on northeastern region. We all know that the government has a clear-cut policy about promoting northeastern in a bigger way. And when you are asking banks to go for bigger way for the northeastern states, that's very important message for them. Apart from them, there were 3 more issues which were routine in nature, but they are also important. We'll continue our discussion with you, Shishir, after we've taken this call from Jaipur. Jitendra, we welcome you. Please go ahead and ask your question. अच्छा सर, जैसे अभी जो 1-1.5 महीना पहले बजट आया था, तो वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए था हमारे ख्याल से. तो जो 22-23 जब मार्च में खत्म होगा, इसमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ वो कब आएगा? अगर मैं इनके सवाल को पूरी तरह से समझ पा रहा हूं, तो जो हमारा बजट आया है जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी है, वो वित्त वर्ष 2023-24 और इनकम टैक्स की भाषा में कहें तो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए है. हाँ. आपका जो सवाल मूल रूप से है कि आपके घाटे और आपके लाभ की बात है, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आप सैलरीड हैं, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करेंगे तो उसमें आप अपनी आय का ब्यौरा देंगे. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर अक्टूबर तक का आपको है, फिर ऑडिट रिपोर्ट का है. उस हिसाब से जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको इनकम पे आपकी जो भी लॉस या प्रॉफिट है उसका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा. ये भी निर्भर करता है कि आप एक कारोबारी हैं या आप एक वेतनभोगी हैं. Shishir, continuing with our discussion, how do you think that the PSBs will react or formulate strategies given the current global financial scenario emanating from the failure of some international banks in the USA and Europe? I think the most important thing that how they are enhancing their capital, and the good thing is that at this moment their capital adequacy is at a very healthy level. So there is not it is not a concern for them. Now, what they can do in case of any kind of future eventuality, because we all know that any kind of disruptions in any market, any global market, does affect banks in India, either in the stock market or in terms of further valuation. So the important thing is that how you raise your capital base to reach at a point where
any kind of disruptions will have a minimal effect. So I think the most important strategy should be this one. Number two, there should be more surveillance mechanism in terms of non-performing assets, because we all know that during last 1 year we have seen a number of activities and number of disruptions at global level, and there is an anticipation, or there is apprehension, I would use the word, that some of the domestic sectors may be affected. So we need to enhance the surveillance mechanism. So I think these two should be the key of the strategy for Indian Public Sector Bank. जी, और इस बीच कोलकाता से हमारे श्रोता अतनु शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतनु जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। Good evening, sir. Good evening to everybody, sir. My question is, what is primary market and what is secondary market, and what's different, and what's the worth of primary and secondary market in India, current situation or previous years? Thank you. Okay. When you talk about the stock market, we normally distribute the stock market into two categories. One is the primary and the second one is the secondary. Primary market means when the company is planning to enter the market for the first time or for the second time. When it enters into the market for the first time, it brings an offer which is called initial public offering or IPO. And when it enters the market for the second time and the third time, or even after that, it is called FPO or the follow-on public offer. In both this IPO and FPO, we have public offering. Public, who is the public? Public is anyone who is not the promoter. It could be an individual who is a retail individual or the high net worth individual. It could also be the institutional investor. So those are the public. And when you are offering the shares to the public, then it becomes public issue. So IPO and FPO, these are the two critical instruments in the primary market, and companies offering shares to the public. Most important thing is when the public is giving the money, that money comes into the account of the company. Now coming to the second part, which is the secondary market. When the shares have been issued, when the shares have been allocated to the investor, those will be traded at a stock exchange. And that stock exchange, that system is called the secondary market. Secondary market is a mechanism where an investor is able to buy or sell shares to any individual or any institution, and that's regulated by a regulator, what we know as the SEBI. So secondary market is a place where an investor buy and sell, and money generated through buy and sell comes to the account of investor. So in the primary market, it will be company who is getting the money. In the secondary market, it is the investor who is getting the money. Joining us now from Bangalore is N.R. Prasad. We welcome you, Mr. Prasad. Please ask your question. Good evening, Market Mantra. Good evening. This is one simple question. With respect to inflation in India, what is the exact meaning of velocity of rupee? Thank you. This is my question. Okay. Velocity of currency means how many hands it is exchanging. I mean, if you have, say, 100 rupees note, the worth of 100 rupees note is 100 rupees when it is in your hand. But it exchanges hands, it goes from A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, and almost 10 people are exchanging the money. Then the value of that 100 rupees note will go up to 1,000 rupees because 10 people have transacted worth rupees 100. So that value becomes 1,000 rupees. This in the economics we call as the velocity of currency. So velocity of currency is also important in terms of the development of the economy. At the same time, we also need to understand that when the inflation is very high and when people are using more and more money, that is also sometimes gives some concern. But overall, when we talk about the growth and the development, velocity of currency is very, very important. और मुंबई से हमारे श्रोता दिलीप कृष्ण जी हमसे जुड़ चुके हैं। दिलीप जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आपका दिल्ली चैनल या रेडियो चैनल का मैं शुक्रिया करूंगा जी। हमारे मुंबई में ये सुविधा नहीं है ऑन एयर अपनी बात रख सके, है ना जी। अरे चैनल तो पूरे देश के लिए है, तो आपके लिए भी वैसे ही है जैसे और किसी के लिए जी। नहीं है ऐसा कोई मराठी चैनल या कोई हिंदी चैनल जी, है ना जी। सवाल पूछे दिलीप जी। तो इसलिए शुक्रिया करूंगा कि दिल्ली में हमको मतलब दिल्ली चैनल पर बात करने का मौका मिलता है। अच्छा, मेरी बात ये थी, मैं एक समाज सेवक हूँ। मैंने करीब 100-200 लोगों से सर्वे किया
मैंने लोगों से बताया कि भाई आप जो है आपके यहाँ ये वार्ड में अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो आपको 10 लाख वोटर के पीछे दूंगा, तो पहले दूं या जीतने के बाद? तो लोगों ने क्या कहा कि पहले दे दूंगा, जीतने के बाद आपका क्या भरोसा। तो मेरा का कहने का मतलब ये है कि वोटर एक्शन यानी वोटर नीलामी 1947 से होना था, तो ये होना चाहिए, रास्ता पूरा दुनिया के लिए साफ होता है। और दूसरी बात ये है कि आरक्षण और जो रिजर्वेशन है ये भी तो नीलामी थी। दिलीप जी, आपका कोई आर्थिक सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? आर्थिक सवाल के साथ में मतलब आर्थिक सवाल लोगों का जो है ये पैसे की वजह से, जो हम गरीब लोग हैं, जो हमारे धारावी में रहता हूँ मैं मुंबई में, धारावी एशिया की नंबर 1 झोपड़पट्टी। जी जी हाँ, तो ये गरीबों के घर में आप देखो धारावी, गोंडी, मानपुर। जी जी, सवाल पूछिए दिलीप जी। सवाल यही था कि ये जो वोटिंग चीटिंग है, हिसाब लेना हमको मालूम नहीं, और सबसे अच्छा वोटर एक्शन, वोटर नीलामी यानी बोली लगाओ राज करो, ये जी जी नहीं करिए। शायद मुझे लगता है कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, वैसे भी शेषे जी, जो ये हमारा कार्यक्रम का जो रूपरेखा है उसके में इस सवाल के लिए कोई जगह है भी नहीं, और हम मुंबई से ही हमारे एक और श्रोता रत्नाकर जी हमसे जुड़ चुके, उनका सवाल लेते हैं। रत्नाकर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सवाल है, अभी जो इनकम टैक्स का जो नया अप्रैल से भरना हम रिटर्न चालू करेंगे, तो जो AIS ये जो नई संकल्पना है, तो AIS में जो सभी हमारा कैलकुलेशन उसमें दिखेगा क्या, और AIS अभी देखना जरूरी है क्या, ये मेरा सवाल। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और रत्नाकर जी, एक और चीज बताऊं कि AIS को लेकर के अब ऐप भी आ चुका है, तो आपको केवल कंप्यूटर पे जाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के पहले AIS देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलता है कि जो आपके हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन है और सरकार के हिसाब से टैक्स का जो कैलकुलेशन है उसमें कोई अंतर तो नहीं है। अगर किसी तरह का अंतर है तो आप उस अंतर को दूर भी कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई कमी रह गई है तो आप टैक्स दे सकते हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई ओवर कैलकुलेशन हुआ है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो AIS जरूर देखें। हम लोग पहले 26AS देख करके ये पता करते थे, अब AIS में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके लिए उपलब्ध होती है, तो ये एक अच्छी सोच होगी। तो जब आप 31 जुलाई, अगर आप सैलरीड हैं, 31 जुलाई 2023 को अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 का रिटर्न दाखिल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। Okay, Shishir, there's a comment which has come from President Joe Biden, and he has said that he's very confident on the U.S. regional banks being in good shape, and he does not foresee any major crisis on the horizon, and he has downplayed Wall Street's angst and lingering fears of broader financial turmoil. So that is a good news coming from the head of the state. Certainly, when a head of a state is giving some kind of assurance to the people that the banks are not vulnerable or banks are not at a weaker front, so that will give some kind of confidence, and hopefully that will have some impact on the Dow Jones as well as the Nasdaq index when they will open on Monday. At this moment, there are a number of uncertain factors are there. So any kind of positive statement, and especially those coming from the head of the state, will certainly give good confidence in the market. So what's your take on the banking sector? If you talk about the banking sector in Europe or in India, see, in India, the good thing is that the regulatory structure is very good. So we are not foreseeing some kind of situation what we have seen in terms of Credit Suisse or in terms of say Silicon Valley or in terms of Signature Bank or any other bank in US. The good thing is that Indian public sector banks, which are 12 in numbers, and the private sector banks, which are 41 in numbers, they are at least at this moment appears to be on a very solid front. Now, coming about the European banks, there are a lot of speculation that what will happen in one region or the other region. And the speculation is because of the higher interest rates. If you compare with the 2008 scenario when the asset quality was in question, in 2023, the issue is the interest rate. And as
the banks are going for, the central banks are going for higher interest rates, that's giving some kind of discomfort to some of the banks which were more relying on the treasury. Okay. और मुंबई से हमारे श्रोता कन्हैया जो हमसे जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर नमस्ते जी, नमस्ते। सवाल पूछें। हाँ सर, पूछता हूँ। हेलो। हाँ नमस्ते सर। जी सवाल पूछिए कन्हैया जी। सर कल जो एक सर्कुलर इशू हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वो ऑप्शन कॉल में जो रेट लगाया गया बाइंग और सेलिंग 0062, उसका मीनिंग कैसा है सर? 10,000 का कॉल लिया ऑप्शन कॉल, तो चार्जेस कितना जाएगा? देखिए, ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी खबर तो नहीं है इस तरह के जब रेट हाइक होते हैं। और जहां तक सवाल चार्जेस का है, चार्जेस तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एग्जैक्ट मुझे भी अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं जो एक अंदाजा लगा सकूं कि जिस तरीके की बढ़ोतरी हुई है उससे आपके सौदे की लागत बढ़ेगी और ये शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। जी शशि जी, इस बारे में हमारे पास खबर भी है, तो हम जो साप्ताहिक शेयर बाजार है उसका हाल भी जान लेते हैं। कल समाप्त हुए सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट का दौर जारी रहा। सरकार द्वारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी करने के बाद निवेशक सतर्क दिखाई दिए। विश्व में बैंकिंग क्षेत्रों की स्थिति को लेकर जारी चिंता का भी असर बाजारों पर पड़ा। सेंसेक्स लगभग 57,520 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16,950 के स्तर के नीचे चला गया। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 463 अंक यानी 0.8% की गिरावट के साथ 57,527 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी 155 अंक यानी 0.9% की गिरावट के साथ 16,945 अंकों पर जा पहुंचा। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 2% गिरकर 23,634 अंक और स्मॉल कैप सूचकांक 1.5% की गिरावट के साथ 26,767 अंकों पर बंद हुआ। शिशिर जी, हम देख रहे हैं कि लगातार 3 सप्ताह से शेयर बाजार में गिरावट दिखाई दे रही है, और जैसा कि अभी हमारे एक श्रोता ने पूछा भी कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा है उसका क्या असर होगा। साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र को लेकर भी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह की चिंता है, तो इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कि अभी शेयर बाजार आने वाले समय में भी किस तरह का रुख अपनाएगा? अमरीश जी, एक अभी जो सवाल पूछा गया था कैलकुलेशन का, वो कैलकुलेशन मैं कर पाया हूँ जी। वो लगभग 1 करोड़ का अगर हम देखें, अगर आपका सेल ऑफ ऑप्शन है, जो आपका जो एसटीटी होगा वो 2,100 रुपए का होगा, और अगर फ्यूचर की हम लोग बात करें, सेल ऑफ फ्यूचर की बात करें, तो लगभग 1,250 रुपए का होगा। तो ये एक रफ कैलकुलेशन जो मैं 1 करोड़ के उस ऑप्शन पे लगा पा रहा हूँ। जी Shishir, if you could elaborate on the hike that is going to be there on the securities transaction tax on futures and options contracts in the layman term, so that the common man can understand. Yeah, see, one thing is very clear that when we talk about the future and option, it is not for the retail investor, it is mainly for the businesses. Because it is providing some kind of hedging instrument rather than providing some kind of spot trading kind of system. Number one. Number two, when we talk about the higher rate of STT, of course the higher rate of STT sometimes does give difficulty to the people, and now people are, especially the retail investors, are also getting attracted to future and option, and that is why they are looking for what kind of rate it would be. So STT is what? Securities transaction tax is over and above what you pay for any kind of transaction. That means you are paying brokerage, you are paying also stamp duty, you are also paying say in terms of capital gain. If it is more than 1 year or it is more than it is less than 1 year, then you are paying short-term capital gain and long-term capital gain tax. So these are other elements. The STT is over and above all those things. It is levied at
at a certain percentage, say 0.0125 or 0.0625. That is the over value of the total or the volume value of. जी तो शिशिर जी, इसका आपको क्या लग रहा है, जैसे अब सोमवार से जब बाजार खुलेगा सोमवार को, तो इसका कुछ एडवर्स इम्पैक्ट आपको फर्दर दिखाई देता है शेयर बाजार के ऊपर? बिल्कुल, देखिए अभी ये जो एक एसटीटी को लेकर के है, अगर आपने कल से कमेंट्री देखी होगी तो ज्यादातर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये समय उचित नहीं था, खासतौर पे बाजार की अनिश्चितता को देखते हुए। सरकार में इसको लेकर के क्या सोच रही है वो अलग हो सकता है, लेकिन बाजार की जो अनिश्चितता है उसमें ऐसा कोई भी कदम जो है वो शायद अभी उसको बाजार उम्मीद नहीं कर रहा था। और दूसरी तरफ जो डेट म्यूचुअल सेशन हटाने का जी हद तक असर डाल सकता है। So what about the removal of the long-term tax benefit for debt mutual fund investors? Would you elaborate on that, Shishir? Yeah. So when we talk about the debt mutual fund, first of all, we need to know what is debt mutual fund. Debt mutual fund is when the equity in fund are not more than 35%. So at this moment, we are in March. So at this moment, we can say, if we talk about the equity mutual fund, there is a different rate of capital gain tax for the short term as well as for the long term. And if we talk about the debt mutual fund, the short term period was 3 years. So after 3 years, the tax on any kind of capital gain was 10% without indexation and 20% with indexation. This was giving some kind of arbitrage to the people, because when you are going to bank and you are putting some money in deposit, whatsoever earning you have to pay according to the slab. Now that indexation has been removed. That means you have to pay tax at your slab. If your slab is 5%, if your slab is 20%, if your slab is 30%, in the older tax regime, whatsoever that gain you have through the debt mutual fund, you will have to pay tax according to your slab. Okay. So you think then the FD will be a better bet to rely on? Certainly, and if you take the cue from the finance minister meeting today with the public sector banks, the first point he highlighted that take the advantage of whatsoever has been announced for the debt instrument. That means government is trying to push more and more deposits. So it will have certainly impact on the banks, and banks will be in a better position to attack, because the rate of return on the banking through the banking channels are higher, while in terms of the debt there is some kind of volatility in terms of when we see interest rate movement. So this is going to see outflow from the debt mutual funds, Shishir? At this moment, since we are talking about from the prospective effect, it is not from the retrospective effect. So all the gains, if I understand correctly from the financial language, all the gains till 31st March 2023 will be grandfathered, and any gain from April 1, 2023 will affect the tax. जी शेषी जी, एक मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज जो बैठक हुई जिसमें वित्त मंत्री ने बैंकों की, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के बारे में चर्चा की, उन्होंने एक बिजनेस मॉडल डेवलप करने की बात कही, जिससे कि जो स्ट्रेस पॉइंट हैं उनको उनकी पहचान की जा सके, और जो केंद्रीकरण मतलब जो कंसंट्रेशन रिस्क है या जो एडवर्स एक्सपोजर है, इनको हैंडल किया जा सके। क्या आप इसको सामान्य तरीके से संक्षेप में बता सकते हैं? एक बैंक के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां उनके लिए सामान्य होती है जिनमें उनको जोखिम जो है वो कम। I am afraid I have to cut you out on this. We have very little time left, and thank you so much for participating in Market Mantra. Thank you. And before we close the headlines once again, Cabinet approves 4% hike of dearness allowance to central government employees. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets chiefs of PSU banks to review performance, and domestic equity indices decline about 1% during the week. Sensex closes near 57,520. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.
Market Mantra.